Hey Backbenchers, Shobik here, and today we're going to solve narration from SP Bakshi 2022 edition. तो चलिए शुरू करते हैं. Hey guys, before we start, let's just have a close look of what narration is. जैसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि narration change. So there are basically two types of narration. First, a direct narration. The second is indirect narration. Now, what is direct narration? Direct narration is a kind of speech which is reported by another person exactly in the words spoken by the speaker. Now, for example, she said to him, "I shall give you money." This is a direct narration. Now, if we turn this into an indirect narration, this will be something like this. She told him that she would give him money. जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो चेंज आया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में आप नोटिस कीजिए यहाँ पर so indirect narration is a speech which is reported by another person without quoting the speaker. Now this is done by using certain conjunctions in the place of commas and making necessary changes in the verbs and the pronouns. और जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया. So दिस इज़ द बेसिक थिंग बिफोर वी स्टार्ट नरेशन चेंज. और इसके जो रूल्स है वो तो हम लोग को सबको ही पता हो. सो आई एम नॉट गोना वेस्ट एनी मोर टाइम टू टीच यू एनी द रूल्स ऑफ नरेशन चेंज बिकॉज आई थिंक वी ऑल नो दिस. वी ऑल हैव लर्न फ्रॉम क्लास 7, 8 और 9. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. शुरू करते हैं. पहला सवाल. मनोज सेड आई मस्ट गो नाउ. और इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन है वो है ऑप्शन ए. मनोज सेड दैट ही मस्ट गो देन. नंबर 2. डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड. सेड द जज फाइनली. एज यू कैन सी दिस डायरेक्ट नरेशन इज एन इंटरोगेटिव फॉर्म. सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए. द जज फाइनली आस्क्ड that if he had anything to say on behalf of the accused. Number 3. The court said, "Don't move, boys." और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी. The coach asks the boys not to move. Number 4. Alas, I have broken my grandfather's watch, said Amit. और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी. Amit exclaimed sorrowfully that he had broken his grandfather's watch. Now, number 6. Sheeta said to her mother, "Do you always get up early?" और इसका जो indirect narration है वो है ऑप्शन डी. Sheeta asked her mother if she always got up early. Number 7. Rita said, "Alas, I am undone." दोस्तों ये undone है, यहाँ पर शायद गलती से L प्रिंटिंग हो गया है. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी. रीता एक्सक्लेम सैडली दैट शी वॉज अनडन. पिछले नंबर 4 में शायद मैंने बताया था कि जब एलास होता है तो क्या होता है, एक्सक्लेम सैडली और सॉरफुली. नंबर 8. राजू रोट ही विल बी गोइंग टू मुंबई द नेक्स्ट वीकेंड. और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी. राजू रोट दैट ही वुड बी गोइंग टू मुंबई the next weekend. Number 9. The principal said, "I want to meet her parents." और इसका जो indirect narration है वो है ऑप्शन सी. The principal said that he wanted to meet her parents. Number 10. Mr. Pattinson said, "I brought a chocolate for you." और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी. Mr. Pattinson said that he had brought a chocolate for me. तो इसके बाद आते हैं नंबर 11. Sheeta said, "Will he listen to such a man?" और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी. Sheeta asked whether he would listen to such a man. Number 12. German is easy to teach, she said. और इसका जो आंसर है वो भी है ऑप्शन डी. She said the German was easy to teach. Number 13.
The boss said to his employee, I'll be happy if you finish this project by evening. तो इसका जो indirect narration है वो है option D. The boss told his employee that he would be happy if he finished that project by the evening. Number 14. Mahesh said to the interviewer, Sir, I was in charge of the production unit at my previous office. और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी. Mahesh told the interviewer that he had been in charge of the production unit at his previous office. Number 15. Mr. Puri said to me, Why are you taking down this fence? Mr. Puri asked me why I was taking down that fence. तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Number 16. The interviewer asked Ashok, Why did you leave that job last month? और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए. The interviewer asked Ashok why he had left that job in the previous month. Sorry, there was no in the previous month. Number 17. The doctor told his patient continue the same course of medicines for the next week. और इसका जो आंसर है आप बताइए पहले इसका आंसर फिर हम करेंगे. और इसका आंसर है ऑप्शन डी. The doctor told his patient to continue the same course of medicines for the following week. Number 18. Uma asked me, How's your brother? और इसका जो आंसर है यह ऑप्शन सी. Uma asked me how my brother was. Number 19. The shopkeeper asked me, Where is your car? और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी. The shopkeeper asked me where my car was. और इसके बाद आता है रिवीजन एक्सरसाइज का लास्ट मतलब कि आखिरी सवाल. तो करते हैं ये भी. नंबर 20. द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आवर प्रोडक्ट्स? और इसका जो आंसर है इसका आंसर आप पहले बताइए फिर हम बताएंगे. इसका आंसर है ऑप्शन बी. द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ ही हैड एनी आइडिया अबाउट देयर प्रोडक्शन. Hey guys, so before we start the exam practice section, I hope you already have realized the level of questions from the revised section, and to be honest, the level is quite high, but we have to practice it, and only by practice we can crack the answers in the exams. And to be mentioned clearly, in the exam practice section, there will be questions from CGS 2018, 2020, CGL 2018 and 20. So questions from various exams will be discussed here. तो चलिए शुरू करते हैं. तो शुरू करते हैं पहला सवाल. The captain said to his soldiers, move forward and face the target now. तो देख सकते हैं दोस्तों आप कि ये सवाल CDS 2018 में आ चुका है. तो करते हैं इसका आंसर. और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी. The captain asked his soldiers to move forward and face the target then. Number 2. Vivek said to his friend, could you please turn off the switch? और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी. विवेक रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू टर्न ऑफ द स्विच. दोस्तों आप देखिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड क्यों आया. यहाँ पर रिक्वेस्टेड इसीलिए आया क्योंकि जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें प्लीज़ का मेंशन है. सो वेन एवर देयर विल बी अ प्लीज़ इन द डायरेक्ट नरेशन, सो देयर मस्ट बी अ रिक्वेस्ट इन द इनडायरेक्ट नरेशन. इसको याद रखिए आप. Number 3. The manager said to his colleagues, we have received a serious threat to our business now and we need to act to face it. और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी. The manager told his colleagues that they received a serious threat to their business then and they needed to act to face it. Number 4. Romila said to Rahim, where were your ideas when we faced the troubles last week? As you can see, there is option A and B in this page and option C and D in the next one. But I don't think we have to go to the next page because let's do the narration change and we'll see. So इसका आंसर है Ramila asked Rahim where his ideas had been when they had faced the trouble the week before. Or as you can see, it's in option A. So option A is the answer. Number 5. The actor said to his co-star Sarita, will you go with me for a cup of tea in the evening today? तो इसका जो indirect narration है वो है ऑप्शन डी. The actor
asked his co-star Sarita if she would go with him for a cup of tea in the evening that day. दोस्तों ये टी होगा, सो द एक्टर इसे आप समझ लीजिए, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. Number 6. The preacher said to the crowd, the sun rises every day for all of us without any expectations in return. और इसका जो आंसर है ऑप्शन डी. The preacher told the crowd that the sun rises every day for all of them without any expectations in return. दोस्तों ये मतलब कि रात पे वक्त में कर रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि दिन में तो मतलब बहुत ही शोर शराबा होता है, तो इसलिए शायद कुछ एज यू कैन सी शैडोज आर फॉलिंग, सो आई होप you will excuse me for that. नहीं. Number 7. Rahul said to his teacher, Madam, what is the way to solve the question? And as you can see, this question is from CGS 2020. तो करते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए. Rahul asked his teacher what the way to solve the question was. Number 8. He said to his friend, could you please close the door? और दोस्तों आपको शायद याद होगा मैंने क्या कहा था, जब डायरेक्ट नरेशन में प्लीज़ होता है तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है. अगर आप देखें ये चारों ऑप्शन, तो ऑप्शन सी और डी तो कभी नहीं हो सकते, तो होगा तो ऑप्शन ए और बी. तो अब बताइए कौन सा होगा ऑप्शन ए और बी में. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए. ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू क्लोज द डोर. अब यहाँ पर ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट भी है और प्लीज़ भी है, ये दोनों कभी एक साथ नहीं बैठ सकते. सो दैट्स वाई ए इज़ द आंसर. नंबर 9. राज said to शीला द सन राइजेस इन द ईस्ट. और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी. राज टोल्ड शीला दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. दोस्तों ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप देख सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है, और मतलब हमेशा के लिए सही ही होता है. तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो जो डायरेक्ट नरेशन में जो स्पीच का जो वर्ब होता है, जो टेंस होता है, वर्ब का जो टेंस, वो अपरिवर्तित रहता है. तो दैट्स वाई द आंसर इज बी. राज टोल्ड शीला दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. Number 10. Navanita said to her friends, what a scintillating beauty it is. और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी. ये शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो ये होगा नवनीता. नवनीता एक्सक्लेम टू हर फ्रेंड्स दैट इट वॉज अ स्किंटिलेटिंग ब्यूटी. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. तो इसके बाद आता है नंबर 11, और एज यू कैन सी इट्स ओनली ऑप्शन ए इज हियर. लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन. The captain said to the soldiers, march forward and aim at the peak of the hill today. तो सवाल को पढ़ के तो ये समझ आ रहा है कि ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं हो सकता. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी. द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल दैट डे. इसके बाद है नंबर 12. वेयर वेर यू लास्ट इवनिंग सेड द लेडी टू हर मेड. और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए. द लेडी आस्क्ड हर मेड वेयर शी हैड बीन द प्रीवियस इवनिंग. Number 13. Those who sowed the seeds last season will reap the harvest this season, said the leader to her followers. तो इसका जो indirect narration है वो है ऑप्शन सी. The leader addressed her followers that those who had sown the seeds the previous season would reap the harvest that season. So option C is the correct answer. Number 14. He said to his manager, could you please pass the bill this week? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी. He requested his manager to pass the bill that week. Number 15. The village chief said to the villagers, all of us need to adopt new regulations. We will protect our earth forever. दोस्तों क्या आप देख सकते हैं ये जो सारे सवाल है ये सीरीज 2020 में आ चुके हैं. तो करते हैं इसका आंसर, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी. The village chief told the villagers that all of them needed to adopt new regulations and they would protect their earth forever. Number 16. The grandfather said to the baby,
मे यू लिव लॉन्ग विथ ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ। तो जैसे कि हमारे सभी के दादाजी ऐसे ही बोलते हैं हम सबको। तो देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, द ग्रैंडफादर ब्लेस द बेबी दैट शी वुड लिव लॉन्ग विथ ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ। तो हमारा आज का आखिरी सवाल नंबर 17, और इसका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। द वॉचमैन सेड थीफ थीफ कैच हिम। तो आप बताइए इसका आंसर, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड टू कैच द थीफ।